हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैलेंजर्स। तो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के। तो पिछले 2-3 वीडियो में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, आप चाहें तो मेरे वीडियो पे आप जा सकते हैं। आप शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और कोई भी डाउट हो अगर उससे रिलेटेड तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर योर डाउट्स। ओके, एंड आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने पढ़ा था सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टर्स। ओके, सो व्हाट वाज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज? R1। R इक्विवेलेंट फॉर सीरीज के लिए क्या था? R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। और R इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल के लिए क्या था? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। और एक की पॉइंट क्या था जो हमें याद रखना था कि जब भी सीरीज होता है तो करंट सेम फ्लो करता है, और जब पैरेलल होता है तो करंट डिवाइड हो जाता है। ओके, और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। हर पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। ओके, अक्रॉस एवरी रेजिस्टर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। ओके, एंड पैरेलल में क्या होता है कि अक्रॉस एवरी रेजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है बट करंट अलग होता है। तो हियर सबसे पहले अगर किसी भी पॉइंट का हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अ सेट ऑफ रेजिस्टर्स का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? करंट को पास करेंगे फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ तो टर्मिनल्स दिया है, अगर नहीं दिया होता टर्मिनल्स तो भी हम जिस एंड के अक्रॉस बोला जा रहा है उस एंड के अक्रॉस हम बैटरी कनेक्ट करेंगे और करंट फ्लो करेंगे। करंट का डायरेक्शन इधर, करंट यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है, current will flow same across all these resistors, therefore this is in series. So R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3. Even if you don't write this formula, you can simply write it 10 plus 5 plus 1 ohm, 15 16 ohm. Okay, so this is the equivalent resistance and current. From Ohm's law, what do we know from Ohm's law? That V is equal to IR and therefore I will be V by R, isn't it? So I is equal to, what is the potential difference? Potential difference यहाँ दिया है. Okay, let us take 8 volt. Okay, suppose 8 volt का potential difference है इस बैटरी के along, then V will be 8 by resistance. What is the equivalent resistance? 16. So it will be 0.5 ampere. So be very careful with the unit. C, current का unit है ampere, resistance का unit है ohm. So you have to mention the unit also. Okay, so now we'll move on to the next question. So our next question is, a 9 ohm resistor is cut into 3 equal parts and connected in parallel. Find the equivalent resistance. So a 9 ohm resistance is cut into 3 equal parts. It means each resistor will be of how much value? 3 ohm. And what is the resistance in parallel? 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus how many resistors are there? 3 equal parts, means 3 resistors, 1 by R2 plus 1 by R3. So you can write here 1 by Rp is equal to 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3. So the LCM will be 3, 1. So 1 by Rp is equal to 1 और 1 का रेसिप्रोकल तो Rp क्या होगा? जो भी वैल्यू आएगा इसका रेसिप्रोकल करना है। इस केस में 1 है तो यू कैन जस्ट राइट 1 ओम, लेकिन अगर कुछ और होता 1/2 होता तो ये रेसिप्रोकल होके 2 ओम हो जाता। ओके, सो यू हैव टू डू द रेसिप्रोकल इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन इन द एंड। सबसे लास्ट में रेसिप्रोकल करना है क्योंकि 1/R1 plus 1 ये वैल्यू किसका है? 1/Rp का है। तो वॉट एवर वैल्यू यू विल गेट हियर, जो भी वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे, वहां आपको क्या करना है? उसका रेसिप्रोकल करना होगा टू गेट Rp. Clear? So let's move on to the next question. Now our next question is find R equivalent. So for that we are going to pass the current from here. Current यहाँ से आया कितना? I. So I current is flowing through this R3, but here it got divided, isn't it? Current का pathway अलग अलग हो गया है. So when it is divided between two resistors, it means that these two resistors are in what?
parallel. Therefore, R equivalent R1 and R2 are in parallel. So 1 by R equivalent for parallel connection is 1 by R1 plus 1 by R2. Here the value is not given. It means you have to find in terms of R1, R2 and R3 only. Okay. So R1, R2 will be R2 plus R1. So you can write here 1 by R equivalent is equal to R1 plus R2 by R1 R2. Therefore R equivalent only, अभी हमने सिर्फ पैरेलल का निकाला है. ओके, पैरेलल इज इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2. ओके, ये हो गया हमारे पैरेलल का. अब देखो, अब हमारा कनेक्शन किस तरह हो जाएगा. इट विल बिकम लाइक दिस. ये R3 है हमारा, सॉरी दिस इज R3, इजंट इट. ये R3 मैंने यहाँ ड्रॉ किया. अब R1 R2 का इक्विवेलेंट मैंने निकाल लिया. आई हैव टेकन आउट द इक्विवेलेंट हियर. ओके, एंड हियर इज द बैटरी. दिस वे ओनली. आपको सिंप्लीफाई करते जाना है अपने सर्किट डायग्राम को. ओके, यू हैव टू गो ऑन सिंप्लीफाइंग द सर्किट डायग्राम ईच टाइम. आप जैसे जैसे सिंप्लीफाई करेंगे यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. एंड सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिंप्लीफाई. इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बेस लेवल. ओके, कि जब भी हमारा पैरेलल होगा तो हम इस तरह से सिंप्लीफाई करते जाएंगे. तो ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R1 R2 by R1 plus R2. So now when the current will flow from here, so it will be same along these two resistors, isn't it? Therefore R equivalent will be, जो भी ये parallel का है plus ये दोनों का add हो जाएगा simply because they both are in series. So R equivalent resistance will be R1 R2 by R1 plus R2. This one plus R3. All right. So now you should understand कि how to simplify the circuit diagram. ये parallel को का जो equivalent है, मैंने उसको ये दोनों को single में कर दिया है, और ऐसा आपको बाकी और भी cases में करने की ज़रूरत पड़ेगी. So you should know how to simplify your circuit diagram. Okay, in very complicated questions you will need to simplify it. Okay, so let's move on to the next question. If you have any doubt with any question, just ask me, or any other question also from somewhere else, you can just write in the description box, or sorry, in the comment section. You'll get the answer in a separate video. Now our next question is this way. We have to find the equivalent resistance and I across AB. What is the current across AB? So here the voltage कहाँ से मिल रहा है वो नहीं बना ना, battery is not drawn. So what you have to do whenever it is asked R equivalent, the question will be like across AB or anything. तो यहाँ पे सिर्फ दो ही points हैं. कभी कभी अगर CD भी लिखा होगा, okay, maybe. तो it's asked across AB. So you have to just draw a battery. Just draw a battery along AB ताकि करंट फ्लो कराने में इजी हो, क्योंकि करंट जब हम देखेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि वो सीरीज है या पैरेलल है. सो लेट्स मूव ऑन. करंट I इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर, इस पाथवे में. अब देखो यहाँ ये तीनों क्या हो गया, करंट 3 पाथवे में डिवाइड हो गया. ओके, इट मीन्स कि ये और ये पैरेलल होगा. बट बिफोर दैट यू कैन सी हियर कि यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स लगे हैं. ओके, तो इसका करंट और इसका पाथवे डिवाइड तो नहीं हुआ है ना. द सेम पाथवे इज हियर, सेम पाथवे, करंट सेम है. इट मीन्स दिस एंड दिस, दे बोथ आर इन सीरीज. सो आर सीरीज is 2 plus 2, that is 4 ohm. And again here this one, see, 2 plus 2, 4 ohm. You can write this pathway 1 and R series pathway 3rd. This is the 3rd pathway. Okay, you can write like that. So 2 plus 2, क्योंकि सीरीज है तो R1 plus R2 हम कर सकते हैं, 4 ohm. Now you can simplify your diagram. How will you simplify? ये दोनों सीरीज ऐड करने के बाद इक्विवेलेंट कितना हो रहा है? जस्ट इफ यू लुक एट दिस पोर्शन, जस्ट लुक एट दिस वन, कितना 4 है ना. तो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस. This is 4 ohm. This one, these two. The central one will be as it is 2 ohm, and below that also this one again 2 plus 2 is 4 ohm. Now this one was point A and this one was point B. Now again the current has got divided into 3 parts. We saw it already. Okay, now these 3 are in parallel. Okay, so 1 by Rp is equal to 1 by 4, 2 and 1. So 1 by 4 plus 1 by 2 plus 1 by 4. All right.
Okay, so we can find out the value of this here. One by Rp, again in this case also we got Rp is equal to 1 ohm. All right. So the R equivalent is 1 ohm. All right. So this is our first answer. ये हमारा solve हो गया ना, equivalent resistance हमारा finally क्या आया 1 ohm. Now the second question is I across AB current. So what is the formula for I? I is equal to V by R. And what is V given here? 8 volt. 8 and resistance is 1. So it will be 8 ampere. That's it.